Good evening, ladies and gentlemen. Can we give a huge round of applause to our dignitaries who have arrived? Everyone, a huge round of applause for the dignitaries who have arrived. We will begin our program shortly. We will start the program now. To our choices bevy of hearts and intellects present here today, esteemed guests, eminent dignitaries, beloved parents and grandparents, a pleasant evening to you all. Reach high, for stars lie hidden in your soul. Dream deep, for every dream leads the goal. Today is a special occasion, one that we will remember in the years to come. It is the time to chill and to cheer, to scintillate and to shine, to inspire and be inspired. It is a matter of great honor to be surrounded by so many special people and to be blessed with the fellowship of our wonderful, eminent dignitaries with us today. We, the students of the HDFC school, on behalf of the management, staff, and students, would like to welcome you all to this celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Putting up an amazing show is all about caring for your actors. We want to see your smiles that show us you are having a good time, and your applause does matter to us, so kindly keep your mobile phones on silent mode and cheer for us. Our desire is for you to sit back and savor this blissful experience that we have all put together with love. Please do not rush to the aisle to photograph your child's performance. Digital photos will be shared post the event. Swachh Bharat Abhiyan is the buzz around the country, so be the change and lead others with your example by not littering in the school campus. Being alone will scare a child, and only your presence will make them feel secure. So do not leave your toddlers unattended during the concert. Please do not rush to pick your ward after his or her performance is over. Dispersal announcements will be made and the parents are requested to adhere to the same. And lastly, we hope you enjoy the show and do applaud the effort of your young wards. Thank you. Saraswati Mahabhage, Vidye Kamalalochane, Vidya Rupe Vishalakshi, Vidyam Dehi Namostute. O lotus-eyed Mother Saraswati, kindly bless us with knowledge and humility. Every auspicious occasion rightly starts with an invocation to the divine. Let us start the event by offering up tribute to the goddess of knowledge. We now request our principal, Dr. Amruta Prabhu, to escort all esteemed dignitaries to light the lamp. Ma'am, please.
Thank you, everybody. I would now like to request Aditi ma'am to kindly announce the felicitations of our esteemed dignitaries present here today. Thank you, Komal. On behalf of the HDFC School Management, I am honored to welcome and felicitate our esteemed dignitaries who have spent their valuable time to inspire and encourage our students. We are happy to welcome our trustee, Mr. Prabhat Rao, who has traveled from Bangalore to inspire and encourage our wards. I request Principal Ma'am and the students to do the honors, please. We are also delighted to welcome and felicitate Ms. Parvati Sheshadri, Principal, the HDFC School, Bangalore, who despite her busy schedule has taken out time to come over and encourage our students and teachers. Her infectious smile is sure to rub positively over all of us. Thank you, ma'am, for coming. We're also delighted to have with us Mr. Rohit Sardesai, associated with Kumar Properties and the Chief Architect of the HDFC School, Pune. I request ma'am and the students to do the honors. You may take your seats now. I hand over to Adrian, who will introduce the band to all of us. If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music. Do you know who said these lines? Albert Einstein. Can you imagine what your life would look like without music? It's simply unimaginable. Living without all those wonderful songs and compositions. To almost all of us, music is a central element in life. And we are extremely fortunate to be studying in a school that supports performing arts. And it's my immense pleasure to welcome the HDFC School Band. Our band has won the second place in Torrance Musical Festival. Seerath Khandelwal and Soham Grover of grade 7 won the Best Lead Guitarist Award. And Pragya Bhaskar of grade 10 won the Best Vocalist Award. Our band will now play two songs, Sinbad the Sailor and Khudi. So let's make some noise for the amazing HDFC School Band. Clap our hands to the beat of the song. Come on, let's cheer the HDFC School Band. Are you ready? Make some noise! Let me see you all clap to the
A huge round of applause for our I band. hope you all enjoyed, but we are not over. There's one more band coming up for us. And we have warmed you up perfectly just for it. Good evening, everyone. I said good evening. We are the school band, and we just recently performed for the finals, and we have the song Goody. We hope you enjoy it. Thank you. खुद को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने खुद को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने गवा है गुजरे जमाने चले हैं जब परवाने खुद को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने I need you to clap louder, guys. Thank you. तेरा है हाँ मेरे रुकना न तुझको गवारा तेरा है बस भी इस पल किसी का न पहरा उड़े जो दिल की पतंग से जुड़े हैं वो याराने जवाब जब जिंदगी के जब गम हो बेगाने ख्वाबों के बादलों में उड़ा है वो दीवाने गवा है गुजरे जमाने चले हैं जब परवाने लिख दे ये फसाना देखे जो जमाना तारों से आगे हो ख्वाबों का ठिकाना लिख दे ये फसाना देखे जो जमाना तारों से आगे हो ख्वाबों का ठिकाना है जगह जहाँ तक गया दुआ हर का तमाम हुए है जगह जहाँ तक गया दुआ हम हुए रबा Clap along, everyone! to our school bands, both of them. Yes. We have Vyom on the lead guitar for our band, Shlok, Samarth, Jatin,
and Riya, and we have Nivriti for the lead singer of the other one. Thank you very much. You've been a great audience. Dear parents and assembled guests, the purpose of education is to replace an empty mind with an open mind. The HDFC School Pune provides opportunities and exposure for children to a wide variety of invaluable learning experiences. Therefore, without much ado, I would like to invite our dear principal, Dr. Amruta Prabhu, to present before you a brief annual report of the current academic session 22-23. Ma'am, please. Once again, a warm good evening to all the assembled dignitaries and guests and parents and my dear students. It is indeed my honor and privilege to welcome our trustee, Mr. Prabhat Rao, who has traveled all the way from Bengaluru to be with us today on this esteemed occasion. Accompanying him is Mrs. Parvati Seshadri, the principal of the HDFC School, Bengaluru, who is there with us today to encourage and cheer our wards. We are also delighted to have as a special guest Mr. Rohit Sardesai, the Chief Architect for the HDFC School Pune and part of the Kumar Properties. Thanks to him, we stand and have our abode in this wonderful premises. Thank you. A huge round of applause for all our dignitaries. My heart swells with pride as I address all of you today. And such moments are precious when I get the opportunity to express my feelings to everyone present. What a roller coaster ride this year has been. But every significant journey in life is fraught with ups and downs. But what vindicates this is the fact that we all have been in this together and have reposed trust in each other. I take this opportunity to extend my deep gratitude to all our parent members, especially to our SMC, EPTA, and Transport Committee members who have been instrumental in lending their solid support and guidance throughout our turbulent journey. The annual concert 22-23 is hence not just a cultural extravaganza, but a true symbolic display of the oneness of all stakeholders who diligently strive to keep the school banner flying high, despite the multiple challenges on road. Without further ado, I would now like to let you into a sneak peek of our academic, sports, cultural, and infrastructure updates, which have been the hallmark of this session and have honed both the students and us as well. To begin with, we are fortunate enough to have the new wing part of the Phase 2 functional and operational for us, which houses the reception, the formal reception area, as well as classrooms and labs for our secondary and the senior secondary students. We have also added music labs for which we have associated with the Torrance Music Academy, a glimpse of which you just had now through the HDFC School Band. Also, we have robotics lab and a tie-up with Omotech. We also have pottery, which is functional for students across all grades. We have the senior secondary labs for physics, bio, and chemistry in the senior secondary wing, as well as the new classrooms for the higher grades from 6th onwards. We have been fortunate enough to purchase 32 new school buses, which are operational and functional for us now. Here you have a glimpse of a few of our students having their joyride in our buses.
Next, please. The HDFC School Pune has been awarded the prestigious International Dimension of Schools, the IDS accreditation by the British Council for 22-25. Thank you. The school has also been recognized as a Microsoft school once again for the year 22-23, and we are proud to say that we have over 100 plus of our educators who have earned their Microsoft Innovative Educator badges for the year 22-23. The grade 10 results for 21-22, we had over 7 academic toppers across the subjects, scoring a full 100% in their subjects, and the highest score was by Sneha Chandrasekhar at 98.67%. Thank you. As we opened the classrooms post the COVID, we have tried to put in renewed emphasis on the socio-emotional well-being of our students, especially those from the special education needs and those from the EWS category. We also focus a lot on student wellness because the pandemic has been harsh to them, and we ensure that these wellness sessions are conducted for our students across the grades by just not the wellness educators, but by their regular class teachers as well. Teacher well-being is also utmost important to us, and we do have wellness sessions hosted for them for de-stressing and rejuvenating and helping them to cope with the daily rigor. It was another proud moment when we had the visit of our education leader, Mrs. Anita Makkar, and the CEO of Heads Edu, Simrita, who visited and felicitated our grade 10 toppers in presence of their parents. Almost after 2 years, we were fortunate enough to host the annual prize distribution ceremony for our pre-primary to grade 11 students, through which they were felicitated for their academic, sports, co-curricular and other activities and excellence. And now, I would like to hand over to my student narrators, because who better than them to take you through the sneak peek of what actually happens in the classroom and outside it. Over to you, Koman. Thank you, ma'am. Leaders are not born. They're made by their experiences in life. And to inculcate leadership qualities in our own students, a student council is formed every year. And the investiture ceremony is held with great dignity and enthusiasm. Career guidance. Career guidance sessions with expert counselor develops a clear roadmap to your ward's future dreams. The HDFC School Pune provides both opportunities and options based on your students' abilities and interests. These sessions are held by various industry experts and our very own enthusiastic parents. SDG. Another hallmark achievement for the HDFC school is the establishment of the very first SDG club. We aim towards building a better world for our future generations. Alongside regular classroom activities, monthly assemblies, we also infuse the core curriculum with attaining the SDGs. Another feather in the cap is the commencement of the TED-Ed Club in the HDFC School Pune for the secondary school. The TED-Ed Student Talks program is a platform for the students on a mission to identify, develop, and deliver ideas via TED-style talks. The theme for the HDFC TED-Ed is purpose driven by passion. The grand finale of the HDFC TED-Ed will take place soon in the coming month. Let's take a quick sneak peek at the activities held in our TED-Ed Club.
Can we have the volume, please? The first edition of the HDFC Internal MUN Pune 2022 was held in the month of August. The vision of the HDFC MUN is to raise a generation of global leaders and to inculcate passion and commitment in them to make the world a better place to live in. Life skills. Life skills help young children understand who they are and what they want to do with their lives. The HDFC school students participate every year in community service programs. And in one such program, they cooked a meal and distributed the meal to the students in Pune School and Home for the Blind. Such activities help them build up an inclusive and compassionate behavior. Parent Connect. Our Parent Connect program invites parents to share their expertise with our students as a monthly feature. IDP. The HDFC School Pune started its extravaganza week of interdisciplinary projects in November 2022. The young enthusiastic students got an amazing opportunity to showcase their creativity, talents, and knowledge about the subject by investigating topics through research, hands-on activities, and by making multiple charts. The young torchbearers of pre-primary had India, My Motherland as their theme for IDP. As you can see here, grades 1 and 2 had Life Below Water as their theme for IDP, and the theme for grades 3 to 5 revolved around various SDG goals such as responsible consumption and production, industry, innovation and infrastructure, and life on land. Field trips. The most awaited time of the year in every student's life is a chance to experience and explore a real world outside the formal classroom. Here at the HDFC School Pune, we leave no moment to develop thinking and exploring skills of our students by giving them a chance to experience and learn from our cultural monuments. As you can see here, grades pre-primary to 2 and grades 3 to 5 visited various places such as Aminora Fire Station, Jagtab Nursery, National War Memorial and Aga Khan Palace. Similarly, grades 6 to 8 visited Zapurza Museum and grade 12 went to Katras Dairy. Student Achievements 22-23. Believe in yourself, you are braver than you think, more talented than you know, and capable of more than you imagine. Rightly said by Roy T. Bennett, the upcoming slides will now focus on the stalwart achievements of students in the various fields. To begin with, the Regional Conference of Sahodaya Schools Pune had organized the first regional conference in which students and teachers were invited to write research papers. Our grade 11 students presented 2 research papers. First, on learning, The Journey to Happiness, written by Akshita Verma, Nivriti S. and Vaibhavi Kunjir, and the other on preparing future fit students, written by Arnav Jhamwar and Tanvi Sangwan. We are proud of their efforts. turn those deep feelings and obsessions of your heart into captivating pieces of literature. Well said by Pawan Mishra. Our student, Sanika Khurana of grade 7, successfully published her second book, The Order of the Golden Clock. And we are proud to share a copy to each of our dignitaries seated here today. Congratulations, Sanika. May you continue to be inspired and write many more books of this kind. Kavya Shingote of grade 9 has also published a first book named Enigmatic Tales. Yet another crowning accomplishment for SDFC School Pune is when Jodaji Chaudhary, Shriyansh Pulipaka and Sanvi Mishra of grade 9 created an app named Digital Sanskritic Manch to promote Indian culture and our handicraft industry. Under the guidance of our teachers Surabhi Agarwal, Smriti Maurya and Amrita Srivastava, and were declared as the winners of National Smart India Hackathon 2022.
Another such winners are Rayansh Tandon and Siddhant Sharma from grade 6, who have bagged the first prize in the CBSE Regional Science Exhibition. They were guided by their maths teacher, Mrs. Amrita Srivastava, and now are further preparing for the national event to be held in Gurugram during the first week of Feb. Our students of grade 9 created a game that provided an opportunity to promote Indian culture, ethos, values, and beliefs through an interesting time travel journey over 3 different time periods: ancient, medieval, and modern. The HDFC School Pune won the National Toy-Kathon and was amongst the 117 winners out of 300 schools that had participated. We are proud that a group of students of grade 11 and 12 bagged in the second prize at the Thinkers Tank based on the concept of Shark Tank hosted by Kalyani School. They had proposed an idea to promote Warli art as an Indian traditional art form. Our young talented students from the pre-primary and primary section have won many medals and trophies in the Inter-School Tiranga competition hosted by the Amanora School, held every year during the Week of Independence. Many congratulations to these talented bunch of kids. Our students from grades 6 to 12 have represented us at the Science Carnival held at Delhi Public School, Pune. Nimisha Birla and Siddharth Sudhir have bagged the 3rd prize in the rag bag category. Sanjana Krishnan and Afan Sheikh have won the 3rd prize in the science quiz. Moving on to our sports achievements. Here are our budding sportsmen winning accolades, laurels, medals, and trophies in various games. In December 2022, we had the DSO matches in which 220 students had participated in different 11 games. National Sports Day. At the HDFC School Pune, we consider health and physical education as integral as core academics. So our students enthusiastically participated and won laurels celebrating this day. Our budding chess star, Krishiv Sharma, who stood first in Inter-School Chess Tournament Pune under 11 category, and won many trophies for chess under various championship competitions arranged by Oberoi International School and Ujjain chess tournaments. Other upcoming sports stars are Dhruv Srinivasan, who bagged bronze medal in Karate State Championships, and Siddhant Jain, who won 2nd position in short distance and 3rd position for long distance in roller skating competition. Now I would like Principal Ma'am Dr. Amrita Prabhu to take over from here on. Thank you, Arnav. Moving on, it is again my privilege to take you through glimpses of our continuous professional development as educators. It is replete with CBSE trainings and webinars, in-house workshops, and Microsoft trainings as well. Next, please. We as educators are learners forever. And at the HDFC schools, I'm sure Parvati ma'am will agree also, we really look forward to our annual symposium, which is hosted at the HDFC school Gurugram by our able education leader, Mrs. Anita Makkar, along with a host of eminent educationists who gather to train and counsel the senior lot of all the HDFC schools. We really look forward to these academic sessions and trainings. We are also fortunate to have amongst us Mrs. Romila Soni,
from NCERT, who is an expert in early childhood care and education and who hosts annual workshops for our pre-primary educators to make them abreast of the latest evolving pedagogies in pre-primary education. Next, please. Our teachers are budding researchers as well, just like our students. And they do make paper presentations based on the action research in the classroom walls. They have presented research papers at international conferences such as ETMA, which was hosted in December 21, which was done in the online mode, where we had over 7 of our educators presenting research papers on various topics. And just recently, in January 23, at the regional conference of Sahodaya Schools, Pune, we had over 9 educators whose research papers were shortlisted and would shortly be published as an e-souvenir. It has indeed been a proud moment for us. Next, please. Our PRT English teacher, Leonora Mendes, presented her paper at the regional Sahodaya conference in person and was also felicitated by the dignitaries present. Teachers' Day is one of those days to which we as educators really look forward to. And we are fortunate to have IIHM Pune, which annually hosts and shortlists teachers from various schools to be gifted the Teachers' Day Awards. And this year, we had Sonali Sutar, Ashita Relekar, and Wajiha Sayyad from our school who were felicitated and bestowed the Teachers' Day Awards. We have been fortunate to be given the opportunity by COE Pune, a flagship of CBSE in Pune district, to host the IPS, that is Integrated Payment System session in our school, wherein we got the opportunity to host over 138 CBSE school principals, which was hosted just last week. So I would say that as we balance ourselves, we try to nurture a growth mindset in our young wards by leveraging the EdTech tools and promoting holistic development. We try to inculcate in them competency-based skills with a scientific temper and help them to hone their 21st century learning skills. We also strive as a team for overcoming our logistical challenges and emerge triumphantly over choppy waters. We empower our educators to lead Revolution 4.0. We try and adapt and evolve the classroom environment through hybrid teaching learning strategies. And last, but certainly not the least, we collaborate and partner not just with the local schools, but on the global platform as well. To conclude, I would say the theme of our annual concert this year is Azadi Ka Amrit Mahotsav. We had the option of choosing lighter themes, but as the world emerges from the shadows of the pandemic, with a few countries still reeling under it, if we turn our gaze outwards, we as Indians are happy to see that ours is a positively growing economy today, at a time when the developed nations are either grappling with inflation, unemployment, or war. It is our emerging nation which has managed to overcome its adversities and keep shining brightly as a beacon, not just to our countrymen, but to the world as well. As is said, hurdles have come, will come in the future too. The one who stands out hard will be the one who will sail out far. Hence, what better way to celebrate than to reminisce and relive the 75 years of our independence through our young students.
today have been guided in this creative journey by not just their teachers, but by an accomplished team of music, dance, and art team. The Swatantra Theatre Group and its trainers have been instrumental in scripting, acting, makeup, besides the rigorous training of all the actors. We are fortunate enough to have their director and founder, Mr. Abhijit sir, with us here today. Thank you, sir, for gracing the occasion. So, dear parents and guests, as I sign off, I set the stage open for our young students to enthrall and entertain you with their songs, dances, and role play, and help you feel nostalgic about our glorious Hindustan. Jai Hind, thank you. Lord Ganesha is considered the remover of obstacles. We've taken this definite pause because we do not want to start this occasion without honoring and welcoming our guest for the day, Mr. Abhijit sir. Sir, please, could you please stand? And we would request Principal Ma'am, and if the students are there around, to felicitate with a memento. Sir has been the director for the Swatantra Theatre Group. You will see all our children acting over here flawlessly, skillfully, because of him and his team who has worked extremely hard. Thank you so much, sir, for gracing this occasion. We would now like to commence our program for the day. Over to you, narrators. Thank you. Lord Ganesha is considered the remover of obstacles. Our program would be incomplete without an invocation to the Lord of all auspicious beginnings, praising him and surrendering to his grace and glory. So let us start the event with Ganesh Vandana. I would like to let us invoke the Lord's blessings for an auspicious start to our event. बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा मेरे अधूरे कर दे तू पूरे आज सानी दा पानी दा पवन सा नमो नमो नमस्ते नमो
गणराय ये जीवन हलाहल है जलता हर एक पल गला हो हे गणराय भबकता दिया हूँ है बुझने लगा हौसला कदम रुक न जाए कहीं झुक न जाए ये सर जो कभी ना झुका Let's give it up for our students of Ganesh Vandana. And today, as we stand poised on the global stage, we hold our heads high with dignity and look back upon the last 75 years of rebuilding that our nation has accomplished, that has consolidated our identity and pride as Indians. और चाहे हम कहीं भी जाएं, हम अपने देश की शान रखेंगे और हमारे धन झंडे का सर हमेशा ऊंचा रखेंगे। तो आइए आज हम आप सबको भारत के भूत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा कराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। इस महोत्सव की श्रृंखला के पहले पर्व में हमने भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाया। श्रृंखला के दूसरे पर्व में हमने इसकी आज़ादी पाने के संघर्ष को बतलाया। आज हम आपको इसी की तीसरी कड़ी से जोड़ेंगे और इसके उज्जवल भविष्य की झलकियां दिखलाएंगे। तो चलते हैं द HDFC स्कूल पुणे, जहां भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर बच्चे एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। हैशटैग आजादी का अमृत महोत्सव। केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे
দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে ঢাকের পিঠে পড়লো কাটি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ সাজানো বরণডালা আকাশে মেঘের ভেলা চলছে ধনু জিনা আসলার ঘন্টা বাজে এলো নতুন সাজে আকাশে পুজোর গন্ধ খুশিতে মন মজেছে আকাশে পুজোর গন্ধ খুশিতে মন মজেছে খুশি শারদরাতে লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে শিউলি ফুলে গন্ধে নাতে খুশির শারদরাতে লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে ষষ্ঠী চাওয়া পাওয়া আড্ডা সপ্তমীটা সেলফিতে সেজেছে অষ্টমী অঞ্জলি আর নবমী জাঁকজমকে আকাশে পুজোর গন্ধ খুশিতে মন মজেছে আকাশে পুজোর গন্ধ Let's give it to the dancers of Dunuchi. மൃദംഗം താളം മുടങ്ങ തരികിട തരികിട ദിൽകിട മേളം താളം മുടങ്ങും നാദം വഴങ്ങിടുമേ തത്തമൃദംഗം താളം മുടങ്ങ തരികിട തരികിട ദിൽകിട മേളം താളം മുടങ്ങും നാദം വഴങ്ങിടുമേ കണ്ണാശൂട്ടിലയും പെരുകിടുമേ ആലിലെ കണ്ണാ വേഗമകനി ഉടൻ നാടായോ പാടായോ ഓടിവാരായി ആലിലെ കണ്ണാ വേഗമകനി ഉടൻ നാടായോ പാടായോ
give it up for the dancers of Kolatham. मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हानलन गोली ग चल जाऊ बाजारी Let's give it for the dancers of Koli. Dude, that was pure awesomeness. क्या आइडिया बनाया यार, क्या कॉन्सेप्ट था. जजेस सारे देख ही रह गए थे. सीरियसली यार, मैंने भी नहीं सोचा. सीरियसली यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना मस्त बनेगा. आई एम सो हैप्पी. और रोनित तुम्हारी कोरियोग्राफी मान गया, तो कॉलेज के प्रभु देवा हो. So, on that high note, आज शाम को पार्टी हो जाए. पार्टी आज. अरे पर कल तो छुट्टी नहीं है ना, और वो इंग्लिश एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो है हमारे. Come on, Rahul. We have worked so hard to get this trophy यार, है ना? हाँ. एक दिन बंक करने का हक तो बनता ही है यार. Don't be such a bookworm. चिल कर मेरे भाई. गाइस, आज शाम को पार्टी पक्का. यहीं पर पीछे 8 PM. ओके? ओके. 3 cheers for Rahul and Ronit. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! बल्ले 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 बल्ले. मेरा भारत महान. मुझे आज भी बिताया हुआ वो दिन याद है जब पहली बार मेरे मन में एक आशंका उत्पन्न हुई और मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरी सत्याग्रह की लड़ाई सार्थक थी? Was it worth putting my compatriots and my people through more suffering and misery just to pursue a dream that was well nigh impossible? क्या इस टूटे विदेश को जोड़ना संभव भी था? Today in 2023 आजादी के 75 साल के बाद कुछ सवाल अभी भी बचे हैं. What does this freedom ultimately mean to you? What do the children of today's India dream of? मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए भारत का और भारतीय होने का क्या मतलब है? Let us walk a while together as I search for my answers. Many years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India awakens to freedom. No, Jawahar, it is India awakens to life and freedom. अरे जवाहर,
आप अभी तक अपने भाषण की तैयारी कर रहे हैं? हाँ पटेल, while waiting for Maulana Azad, I'm rehearsing my speech. I'm ready, Jawahar. Let's go. पटेल, पटेल। दोस्तों, मुझे आज बापूजी की इतनी याद आ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें बुला रहे हैं। Yes, I really wish Bapu was here with us today. He would have blessed our country on its first Republic Day. जवाहर, Excuse me, are you looking for someone? He looks so much like Bapu, doesn't he? Baba, आप खो गए हो क्या? How? Baba, आप खो गए हो क्या? How may we help you? brothers, I am your real Bapu. What? You do look like Bapu. But how is this possible? बापू हमारे बीच में नहीं रहे। अच्छा, ठीक है आज़ाद। Why don't you tell me when we got our independence? 3 years ago, in August 1947. Exactly. And where are we today? Today is the year 1950. नहीं नहीं दोस्तों, today is not the year 1950. What? Today is the year 2023. 2023? Jawahar, you have already given your speech. Tryst with destiny. And Patel, you have already added 562 princely states. 562? And the structure of the Union of India is now complete. So are you saying we all are spirits and are not living beings? Is this the afterlife? Yes, my dear friends. We're all dead. And now we're in heaven. समय का पहिया आगे बढ़ चुका है और हमारे भारत को आज़ादी पाए हुए 75 साल हो चुके हैं। 75 साल? We have had our green revolution, which changed India's status from a food deficient country to the world's leading agricultural producers. Wow! With Chandrayaan and Mangalyaan, we have not only reached the moon, but also touched Mars. Mars? And now, we are proudly led by our 15th president, Mrs. Draupadi Murmu, who belongs to the tribal community. आप सब अचंभित लग रहे हो। Brothers, friends, let's take a look at how our beloved India has shaped out in all these years.
राहुल चलो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। अरे बहू, हमें तो सिर्फ कड़ी और खिचड़ी ही चाहिए, उसके साथ थोड़ा सा अचार, दही और पापड़ तल लो तो फिर मजा ही आ जाएगा। अरे कितने नखरे हैं सबके, खाना कितना और बात कितनी। आओ बेटा बबलू। दादी डोंट कॉल मी बबलू, मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना ही होगा। और मैं हूँ रोनित। अरे बच्चों रुको, यदि आप भी ला रहे हो तो मेरे लिए भी एक देसी बर्गर ऑर्डर कर लेना। अच्छा, अब ये देसी बर्गर क्या होता है? ओह मैं बताऊं, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। अरे हद हो गई। क्या हुआ बेटा, आने में बड़ी देर कर दी? ये कोरोना ने क्या जादू कर दिया, बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ गैजेट्स ले गए हैं। अरे आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, बच्चे हैं, थोड़ा खेलेंगे थोड़ा मस्ती करेंगे। अरे बहू आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये तो फिक्र की बात है। शिक्षा तो बहुत जरूरी है, मेहनत के बिना हमें कुछ नहीं मिलता है। सही कहा पिताजी, हमने तो पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत की, हमने जी जान लगा कर पढ़ाई की। विद्यार्थी न कुतः सुखम, सुखार्थी न कुतः विद्या। अब ये विद्यार्थियों के बीच में कुत्ते कहाँ से आ गए? Hey, who let the dogs out? अरे बच्चों रुको, आपने तो अर्थ का अनर्थ ही कर डाला। कुतः मतलब कहाँ से, सुख चाहने वालों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? मेहनत के बिना हमें ज्ञान नहीं मिलता है, तो फिर आलसियों को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? हाँ बच्चों, पुराने जमाने में पुरुष तो पढ़ सकते थे, लेकिन स्त्रियों का पढ़ना गलत माना जाता था। हाँ, हमें आज भी याद है जब हमारे सेनानी भाई हमें बताते थे कि सावित्री बाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कितनी कष्ट झेले थे। अब ये सावित्री बाई फुले कौन है और इन्होंने ऐसी क्या कष्ट झेले जो आप उनके गुणगान गा रहे हो? जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो। फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का, फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का, मुलगी घराबाहेर पडली तेव्हा पातळ घडायचं, मुलगी घराबाहेर पडली तेव्हा पातळ घडायचं, मुलगी शाळेला गेली तर तेव्हा धर्म बुडायचा, मुलगी शाळेला गेली तर तेव्हा धर्म बुडायचा, फक्त चूल आणि मूल हे विसरली असती का, फक्त चूल आणि मूल हे विसरली असती का, फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का, फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का. Let's give a huge round of applause to our choir, to our music teachers and the students who are accompanying them. फुलताईनी पहिली शाळा पुण्यात काढली हो, फुलताईनी पहिली शाळा पुण्यात काढली हो, स्त्री शिक्षणाची पाठी हाती दिसली असती का, स्त्री शिक्षणाची पाठी हाती दिसली असती का, खरी विद्येची देवी आम्हाला कळली असती का, खरी विद्येची देवी आम्हाला कळली असती का, फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का, फुले सावित्री नसती तर मुलगी शिकली असती का, मुलगी शिकली असती का, मुलगी शिकली असती का. आ काय खरं नाही असं म्हणायचं. किती समजायचं,
कळत कसा नाही या लोकांना? अरे क्या हुआ, आप आज बड़े परेशान लग रहे, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको इतना परेशान कर रही है? देखो जरा अपने आसपास सावित्री, महिलाओं की क्या हालत हो गई है इस समाज में। आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? क्या आप रूढ़िवादियों को चुनौती देना चाहते हो? चुनौती नहीं, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा का मैं तो समझाना चाहता हूँ। विद्या विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, एवढे सारे अनर्थ एका अविद्येने केले। बिल्कुल ठीक कहा आपने, शिक्षा में तो बहुत ताकत होती है। आपने मुझे शिक्षित करके एक दिया जलाया है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि उस एक दिए से मुझे सैकड़ों दिए जलाने होंगे। मैं स्वयं स्त्रियों को जाके पढ़ाऊंगी। मैं जानता हूँ रास्ता बहुत कठिन है, अंधकार कितना भी गहरा हो, उजाला तो हो ही जाता है, और यहाँ भी जरूर होगा। बेटियों का भी शिक्षा पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। जिचा हाथी पाया ची दोरी की जगह से उद्धारी। अरे मैं तो सब्जी खरीदने दुकान गया था, लेकिन सारी दुकानें बंद थी। अरे बाबा, हे पुणे पुणे, इथे 1 ते 4 सारे बसा। अरे देखो देखो, सावित्री जा रही है। रुक जाओ पापी स्त्री, तुम दोनों पति पत्नी तो हमारे समाज का पतन करके ही रहे। बंद कर लड़कियों को पढ़ाना, वरना नरक में जाओगी। इस सावित्री ने हमारी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी है, हमारे सामाजिक मान्यताओं का अपमान किया है। हम ये कभी भी सहन नहीं करेंगे। इस सावित्री ने लड़कियों को इकट्ठा किया है, कहती है उन्हें शिक्षित करूंगी। अगर लड़कियां पढ़ने लगी तो जार सत्यानाश। साम दाम दंड भेद, हमें जो करना है वो ही करेंगे, मगर स्त्री को आज रोक के ही रहेंगे। मैं आप लोगों की श्राप सुनूंगी। आप मुझ पर पत्थर फेंकती रही, गोबर फेंकती रही, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगी। बच्चों, शिक्षा तो एक ऐसा प्रकाश है जिससे जीवन के सारे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा तो एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। अरे विद्या तो सबका अधिकार है। विद्या के लिए ऊंच नीच छूत अछूत कुछ नहीं होता। विद्या तो एक ऐसी पारस मणि है जिसको स्पर्श करते ही हमारा जीवन स्वर्ण हो जाता है। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी जैसी ही प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना ले। तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी। अमुक धूप में साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे धारी। मैं तेज हूँ
तू है ख्वाब, तू यकीन, तू ही सक, तू शक्ति, हम संगार साया बने, तुझसे शुरू दुनिया सारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बहना दुलारी। तू जो चले कुदरत चले, समय की सवारी हो नारी। तू ही जन्मी और धांगिनी, तू ही है बेटी हमारी। कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे, कई रूप है तेरे नारी। सरस्वती नारी है तेरा दुलारी, नारी अर्धांगिनी नारी। Let's give it for the students of empowerment, the dancers of Nari. A huge round of applause to them. तो समझे बच्चों, ऐसी थी सावित्री बाई जिसने देश में पहली पाठशाला खोली थी लड़कियों के लिए। इतनी महान थी सावित्री बाई। Hats off to सावित्री बाई। तुम दोनों बताओ, स्कूल तो हो गया, आगे क्या? बेटा जी, ग्रेजुएशन का कुछ सोचा है? हाँ, मैं तो विदेश ही जाऊंगा पढ़ने के लिए। लेकिन बेटा राहुल, ये विदेश जाके पढ़ने की क्या जरूरत है? पापा, वहाँ जाकर मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसीलिए मैं तो अमेरिका ही जाना चाहूंगा। पर बेटे, ऐसे क्या हो जाएगा वहां जाकर? मैं आईटी पढ़ूंगा और वहीं पर नौकरी कर लूंगा। अरे बेटा रोनित, तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? मैं तो कुछ डिफरेंट करना चाहूंगा। I want to do something about Indian culture and Indian art. अरे वाह, मेरा बेटा कितना होशियार है। ऐसे ही ऑफबीट करियर का जमाना है, जिसमें तुम्हारा मन लगे वही पढ़ना। मामा, अरे रे 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 रे। बिल्कुल, मेरी मामी है जो मुझे समझ सकती है, और ये सब पढ़ने के लिए you know what's the best place? London. हाँ, लंदन की सबसे हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन मिल सकता है। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, but mom, you are my bank for life and I will take your dinero. I don't get the point, Jawahar. Why? Why do these children want to go abroad to study our culture and literature when they can study and observe our rich culture and heritage right here? Yes, I do have to admit, Patel. Bapu, I have something to confess to you. Please go ahead. It is disappointing to see the kids of today's generation. They're talking of hobnobbing the very people we fought tooth and nail against. Yes, I agree. Bapu, does that not scare you? Namaskar, Bandhu. Namaskar, Gurudev. तो आप सबके बीच क्या बातें चल रही है? हमारे देश के बच्चे बाहर जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं। इस पे आपके क्या विचार हैं? Well, you know what I think? Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Friends, let us not cloud our minds with fears for the future. Our nation is but one canvas to paint on, and all of us are colors of one rainbow. Gurudev, you have always been our guide and mentor. Please continue to show us the right path to the youth of India. Their passions are misdirected, and when the time comes to fight for a cause, their heart is not in it.
Just see what is happening. राहुल बेटा मेरी बात सुनो, बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। अपने भी तो देश में कितनी फेमस यूनिवर्सिटीज है। अपने पुणे यूनिवर्सिटी को ही देख लो, मैंने अपनी डॉक्टरेट वहीं से की है और वहां पे कितने विदेशी आते हैं। और तुम हो कि अमेरिका अमेरिका की रट लगा रहे हो। नो डैड, नो, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड। मैं अपनी बात से नहीं हटने वाला। आई मीन जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, पॉवर्टी, पोल्यूशन, pathetic infrastructure, corrupt leaders, and too much academic rigor. An unemployed youth is just a burden to the nation. मैं नहीं रुकने वाला। Have you forgotten that it is because of this academic rigor the world's top MNCs have Indian CEOs at their helm? बच्चों, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें ही कुछ नया करना होगा। अरे दादाजी, हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो सब सत्य पुराने अंधविश्वासों को लेकर बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा रोनित। अब ये अच्छे दिन कब आएंगे किसको पता। We can't keep waiting for a great change to happen. बेटा, तुमने ये गाना नहीं सुना? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो समझे बच्चों, देश को बदलने के लिए बाहर से कोई नहीं होगा, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर होमी भाभा ने इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। Good evening. You are listening to All India Radio. Let us take a sneak peek at India's development into a nuclear armed nation, initiated by Dr. Homi Bhabha. Dr. Homi Jehangir Bhabha, one of the greatest scientists of India, witnessed in 1947 the wrath of nuclear power as 2 cities in Japan were reduced to ashes. This made him anxious to ensure the safety of our country and the security of its future. And he decided to develop India into a nuclear-armed nation. GID, I want us to carry out research in the field of nuclear energy. Nuclear energy? For what? You know what happened in Japan. That's exactly why I want to do this. Oh, really? So this is your objective? To be able to destroy millions and millions of innocent lives? No, no. Our objective behind nuclear energy is only peace. But if as a nation we are forced to use it to secure our country, we shall do that as well. We will not be considered a weak nation, ever. And hence, Dr. Bhabha decided to approach his former colleague and friend, Dr. Wilfred Lewis, who was also the director of the Canadian Nuclear Laboratories. Let me call him. I have to talk to him. Hello. Hello. Is this Mr. Wilfred Lewis? Yes. And you're Homi Bhabha, if I'm not wrong. Oh, you surprised me. How did you recognize my voice after such a long time? Because you've been more than just a friend to me, Bhabha. Our association has been more than just formal. And I've always admired you for your intellect as well as your compassion. Please, tell me how I can help you today. Wilfred, I'm on a very important mission here today. We, as a nation, are going to produce nuclear power, and I request Cyrus to help us build a powerful reactor so that I can carry out the work smoothly. Sure. I think we can start off the work in the next 6 months. No, Wilfred, I can't wait that long. I have a target to finish this entire program within a year. Is that a joke, homie? Are you crazy? 1 year to carry out this experiment is impossible.
Yes, I know, and I would have agreed with you had I not been so determined. But friend, I have resolved to make India a nuclear superpower, come what may. I see. You resolved to take up this enterprise, Baba. Okay, all right. The Canadian nuclear laboratories will definitely help you in your mission. तो देखा बच्चों, एक ही साल में हमारा देश न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। किसकी वजह से? डॉक्टर होमी बाबा की लगन और निष्ठा से। बिल्कुल सही। और आने वाली पीढ़ियां इसे हमेशा याद रखेंगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मेहनत करो। हाँ, मेहनत तो गधा भी करता है। उसने ऐसे कौन सा तीर मारा? अरे दादाजी, हमेशा मेहनत मेहनत मेहनत। पहले जब मैं 10वीं में था तब आपने कहा बेटा मेहनत कर लो, फिर जो जी चाहे करना। फिर जब पता चला कि 12वीं भी है तब भी आपने यही कहा बेटा मेहनत कर लो, फिर जो जी चाहे करना। कर ली जितनी मेहनत करनी थी। इनफ इज इनफ। आई कैनॉट टेक दिस प्रेशर एनी मोर। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। I'll go to any country that supports and fulfills my dreams. बच्चों, ये देश तुम्हारा अपना है। इस देश को छोड़ के तुम विदेश जाना चाहते हो? बच्चों, हमसे दूर मत जाओ। परिवार का मतलब साथ रहना होता है और भारतीय संस्कृति भी हमें यही सिखाती है। अरे दादी, साथ रहने में क्या रखा है? आजकल सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है। स्पेस। न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया। ना किसी पर बोझ बनो, ना किसी का बोझ झेलो। अपनी अपनी जरूरतें देखो और उन्हें पूरा करो। We have a right to live our life the way we want. अरे, इसे स्वार्थ नहीं कहते। अपना देखो और अकेले रहो। हमारा देश तो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। हमारा देश ही हमारा परिवार है। सही कहा आपने पिताजी। राहुल, रोनित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही देख लो। एक ऐसे महान व्यक्ति जो लंदन से बैरिस्टर बने, जर्मनी में अध्ययन किया और साउथ एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनके पास 2-2 PhD मौजूद हो। पर ये सब उन्होंने इसलिए किया कि वो अपने देश परिवार को कुछ दे सके। इतना ही नहीं, पढ़ाई बाहर के देशों में की, लेकिन अपना पूरा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया और अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री बने। जरा सोचो बच्चों, अगर अम्बेडकर जी भी आपके जैसे सोचते तो देश किस हालत में होता, हम सोच भी नहीं सकते। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा। वाह बेटा वाह। भीमराव, लय शिकला रे तू। अब तुम अच्छी नौकरी कर लो, बस यही हम चाहते हैं। भीमराव, तुमने जिस लगन से पढ़ाई की है, हमें तुम पर गर्व है। पर इस शिक्षा का हमारे समाज को भी फायदा होना चाहिए, है ना? माँ, पिताजी, आपने सही कहा। हम पर जुल्म हुए ये कहकर कि हम किसी विशिष्ट जाति या वर्ग के लोग नहीं हैं। हमने न्याय सहा, लेकिन अब मुझे मेरी शिक्षा का उपयोग उन लोगों के लिए करना है तो आज भूखे हैं। मैं सिर्फ अपने या अपने परिवार के बारे में सोचूंगा तो वो गलत होगा। वसुधैव कुटुंबकम, यानी यह संपूर्ण पृथ्वी मेरा परिवार है। इस देश में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हर इंसान को गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा से जीने का हक है। भारतीय संविधान, जिसमें मुझे योगदान देने का अवसर मिला है, हमारे देश का गौरव बना रहेगा।
जी ना होते और उन्होंने कमजोर लोगों को संगठित ना किया होता तो आज हम इतनी तरक्की नहीं कर पाते। बट डैड, विद द चेंजिंग टाइम सबको बदलना चाहिए। मैं क्यों ना बदलूं? इन फैक्ट आवर कंट्री विल आल्सो चेंज टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यू जनरेशन। क्यों तुम्हारी बात एक ही पॉइंट पर की है? हमेशा देश और सरकार को कोसते रहते हैं, पर शुरुआत तो हमसे ही करनी पड़ेगी ना। Come on, Dad. Dad, we are in an era of globalization. I don't see a point, Baba, in living in the past. We can get a scholarship. We will study and settle abroad. We will do it our way. और दादी, ये जो दीवारों पर फ्रेम लटका रखे हैं, they are just picture of a bygone past. दादाजी, मैं इन्हें नहीं जानता जिनकी फ्रेम आपने दीवारों पर टांग रखी है। मैं तो इन्हें जानता हूँ जो मेरे सामने बैठे हैं। I am feeling disappointed with what I'm seeing, Bapu. Where is that glorious belief in India's future we all at once felt? What happened to that dream? Indeed, Jawahar. We are everywhere. Statues on every crossroad, photos on countless walls, and even printed on the currency notes. But sadly, we are not in their hearts anymore. I even doubt if anyone remembers us. ये क्या आवाज आई जा रही है बाहर? पता नहीं, चलो चलो देखते हैं। बहू, अरे ओ बहू, क्या हुआ पिताजी? क्या हो रहा है बाहर? क्या मालूम, शायद कॉर्पोरेशन वाले आए हैं। इस सवार से तो काट फटे जा रहा है। दादाजी, दादाजी, बाहर कुछ लोग हैं, पेड़ को काट रहे हैं। बाहर बहुत भीड़ हो रही है और कुछ लोग रो भी रहे हैं। क्या? चलो देखते हैं। ये अच्छे से काटना है पीछे वाला। अरे यार, ये वाला काटना है, गधे, ये वाला। अरे तेरे को बोला वो वाला काट, दिमाग में बात नहीं घुसती क्या? पेड़ काट पेड़। अरे जल्दी काम करो, और कितना समय लगेगा? अरे क्या कर रही है? हटिए यहाँ से। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हमारे बड़ बाबा की जान ले ली इन लोगों ने। अब इस मोहल्ले में कोई नहीं बचेगा। ये पेड़ नहीं था, ये बरगद था, बरगद। जालिमों ने बरगद की जड़ें काट दी। अरे संभालिए अपने आप को। देखा देखा, अरे मेरी जड़ें भी कट गई। एक सदी का नाश कर डाला तुम जालिमों ने। ए भैया, ए बरगद को वापस ना कर दो भैया। ए बरगद हमारी जड़ें हैं, ए बरगद ही हमारी पहचान है। अरे यही तो पेड़ था जिससे पूरा मोहल्ला पहचाना जाता था। ये पेड़ नहीं था, इसकी जड़ों में हमारा बचपन था, बचपन। अरे यही तो बड़ बाबा थे जो हम भी सिद्धूकन के साथी थे। हम भी तो पहचान ही कट गई रे। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो आप? वहाँ से मेट्रो जाने वाली है, मेट्रो। अब यहाँ पे रेल बनेगी, रेल सब सुविधाएं होंगी। विकास हो रहा, विकास। अरे कैसे तुम्हारी सुविधा और काय का तुम्हारा विकास? उजाड़ गई रे। सर, ये सब कटिया गए हैं, आप इनके मुंह ना लगे। हाँ सर, आप इनके मुंह ना लगे। अरे पेड़, वो भी बरगद का। हमारे गांव में ऐसा कहा जाता है कि कोई महामारी इन पेड़ों के होते हुए हम इंसानों को नहीं छू सकती। बरगद के पेड़ का मुरझा जाना, बरगद के पेड़ का मिट जाना। अब वाकई इन दोनों की सृष्टियों में मुझे अपने पूरे गांव की रुलाई सुनाई देती। देखिए बाबा, ये रोना धोना बंद करो, बंद। सरकारी फरमान तो सरकारी फरमान। हमने अपना काम किया और अपना काम करके जा रहे हैं। आपका हो जाए तो आप ही चल जाना, और तुम लोग इनको थोड़ा पानी समझे? हो गया मेरा हिप। जैसे उन्होंने अपनी फौज बनाकर भारत में ब्रिटिशों को चुनौती दी थी,
अब वैसे ही हम भी हमारी फौज बनाकर मैदान में उतरेंगे और हमारा हथियार होगा सत्याग्रह। आज आखिर में आपसे मुलाकात हो ही गई। कौन? सुभाष बाबू? Subhash, is that you? Yes, Bapu. I know my path was different from yours. I took up arms, raised an army, but the name of my brigade was Gandhi Regiment, because I've always believed in you. But Subhash, the present condition of our country is no less worse than slavery. We have all been very perturbed to see that there are no guiding ideals for the children of today. Yes, Babu, absolutely. What we are witnessing now is frightening. Gandhi ji, Nehru ji, I invite you all to shed your fears and to see our country for what it has truly become, an amalgamation of the ideals of Subhash and Gandhi. हम लोग ये ऐलान करते हैं कि कॉर्पोरेशन के लोग जब तक ये वादे नहीं करते मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक भी पेड़ नहीं काटेंगे, हम लोग यही बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे। हम चौटाला की तरह डटे रहेंगे। दादा दादा देखिए अरे साहब, यहाँ तो बहुत भीड़ दिख रही है। शायद वो हमारा चित्ता कर डाले। अरे रुक, डर क्यों था? वो के अंदर है, जो उसे बाहर निकाले वही सिकंदर है। चलो हम देख लेंगे। आप लोगों को कितनी बार समझाना पड़ेगा, ये आखिरी में चेतावनी दी जा रही है। अगर आप लोगों ने हम पे और बातें डाली, हमें मुझे
दुनिया देख रही है। क्या लाइव आंदोलन का क्या मतलब? सामाजी की लाना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना आज़ेगा दिल में। गा देना बच्चों, गा देना। बताने दो, बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुत अच्छे बच्चों, इनको ऐसी तो सिखाना पड़ेगा। What? 75,000 views already? This Andolan is the song of the nation. और आपका ट्रांसफर ऑन द वे है। Dude, your history. Transfer? पूरा transfer? अरे क्या हो रहा है यहाँ? हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, हमने तो बाप को धमकाया ही नहीं है, हम तो ये बकरी की तरह खड़े हैं। क्यों बकरी? अरे साहब जी, आप तो से सीधा बकरी बन गए। पहले तो बहुत बड़ी शोर शायरियाँ करते थे। अच्छा इन लोगों ने काफी दिखा रास्ता था, ये तो बहुत सुंदर रास्ता अपनाते तो। अरे रुको, मुझे माफ कर दो प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर, डिजिटल का जमाना है। अब तो सॉरी भी हैशटैग में कहना पड़ेगा। हैशटैग सॉरी। Babu, did you see? I told you, we need not lose faith in our current generation. Our fight has not been in vain. सुभाष, तुमने ठीक ही कहा। हमने जिस देश का सपना देखा था वो साकार होते दिख रहा है। हमारे पास रोनित और राहुल जैसे बच्चे जो है, थैंक यू रोनित। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय और ये रही आपकी बिना शक्कर वाली चाय। पापा 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 पापा, I made it through the University of Alabama. I made it through. अरे रुको रुको राहुल बेटा, क्या हुआ? इतने खुश क्यों? अरे राहुल बेटा क्या हुआ? स्लो डाउन। पापा, आज मुझे अमेरिका के अलाबामा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए। वाह राहुल बेटा, ये खबर सुन के मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश राहुल बेटा, सच में तुमने आज बहुत अच्छी खबर सुनाई है। राहुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। रोनित, अब तुम भी जल्दी ही ऐसी गुड न्यूज लेकर आना। लंदन से कोई खबर मिली? खबर मिली ना माँ, मुझे एडमिशन मिल गया है, पर लंदन से नहीं, अपने पुणे यूनिवर्सिटी से। हाँ दादाजी, मैंने कुछ दिन पहले ही एप्लीकेशन भेज दिया था। जहाँ से पापा ने अपना फ्यूचर बनाया, मैं वहीं से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। दादा दादी, मैं पहले यही सोचा था कि विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगा तो ही मेरी लाइफ सेट होगी, पर पिछले हफ्ते में जो सब हुआ वो देख के मेरी सोच पूरी की पूरी बदल चुकी है। और डैड, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अलाबामा में पढ़ने के बाद मैं वापस भारत ही आऊंगा और अपने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को एक साकार रूप दूंगा, इसी देश में, इसी शहर में। वेल डन राहुल एंड रोनित, आई एम रियली प्राउड ऑफ व्हाट यू बोथ हैव बिकम। थैंक यू पापा। अभी हम केवल पासपोर्ट पे ही इंडियंस नहीं, वी आर इंडियंस एट हार्ट एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियन। यस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर
एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। Let's give it to our students who are performing for the song Desh Mere, the last song for the day. We are now moving to the grand finale. All the actors, dancers, the choirs will be up on the stage. I request you, dear parents and guests, if you can switch your torchlight on and wave it to the kids. I request all the parents and guests to switch on your torchlight and wave it to the children. This program would have not been successful without our musicians, the artists, the sound, the lights, the IT department, our teachers, our admin staff. I request Principal Ma'am and the VIP dignitaries to also come up. I request the coordinators, our principal Dr. Amruta Prabhu, to escort all our dignitaries for the day to come up for grand finale. Parents, I think we give them a huge round of applause to all our students who have worked tirelessly for the last whole 1 month. We owe it to them. Come on, dear parents. You can go louder than this. To get up and wave your torchlight to our students waving out there. Yes, keep waving. This is how we do our finale in the HDFC school. And I want you all to sing with our students. Come on, parents. Keep waving, don't stop. नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको
to sing a little louder. More louder. More louder. 1, 2, 3, 4. Yes, come on. Keep waving the torch. Keep waving the torch. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you so much, parents. Thank you so much. We still remain on the stage. I would take this moment to thank all the people who are behind the scene, the music department. A huge round of applause to our music department. Parents, you may remain seated. We will quickly have a vote of thanks, followed by refreshments, and then you can collect your awards. So parents, I know you have been patient enough. You have been supportive to us. Please sit down. We'll quickly do the vote of thanks. We'll have refreshments. It gives me immense pride to express my heartfelt gratitude to our dignitaries who have spent their valuable time to inspire young fellow students. A big thank you to you parents and guests who have been our unflinching support system. A huge round of applause to our parents, please. You have always ensured the enthusiastic participation that we need from you as well as your wards throughout the rehearsals and even on this day. I also extend my gratitude to our dance teachers, our music department, the art department, for providing us with a gala extravaganza through their songs, dance, choreography, and creativity. Can we give a huge round of applause to them, please? The scripting, acting, makeup, and all fine timing of the act was only possible due to the diligent efforts of the Swatantra Theatre Group and their immense talented trainers who have guided our students from day one. Last but not the least, we want to thank our sound team, the light, and the mandap arrangements, besides the photography and the videography team, who have added color and charm to this event. Once again, thanking our teachers, coordinators, our admin staff, our support staff, our IT department. The list goes on. Without whose presence and support, this event would have not been possible. So, huge round of applause for all the people who are behind the scene. Thank you all. Jai Hind.